हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हमारा करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आया है, उसमें हम आज अगले सीरीज़ के साथ जुड़ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम मार्च महीने के जो फर्स्ट हाफ के करंट अफेयर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। सो इन दिस सीरीज़ वी आर गोइंग टू deal with those MCQs which will be covered in the first part of March, and along with that particular topics we will try to find out or scale those main topics which can be formed from these particular news. So let us start the discussion. So the first question talks about recently India joined Agriculture Innovation Mission for Climate, that is AIM4C. So now this initiative is a initiative of which of the following countries? तो इस इनिशिएटिव को इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन ये इनिशिएटिव इस पर्टिकुलर स्कीम को किसने इनिशिएट किया आप कह सकते हो, या इस ग्रुपिंग को, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एंड दैट पर्टिकुलर द आंसर विल बी बोथ यूएस एंड यूएई। सो इफ़ यू से दैट इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड टू ज्वाइन द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट विच हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय यूएस एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स in November 2021, and the aim of this initiative is to increase investment in and support innovation in climate smart agriculture. So those agriculture practices which will make the agriculture practices smart and climate friendly. ठीक है, तो AIM4C ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 20th बायो एशिया 2023 was held in which city? अभी हाल ही में जो बायो एशिया 2023 का 20वां समिट किया गया है वो ऑर्गेनाइज किस सिटी में हुआ है? एंड द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। सो हैदराबाद तेलंगाना में इसको किया गया है। एंड द थीम ऑफ दिस ईयर वाज एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ठीक है, और यहाँ पर वेन्यू आप देखेंगे तो हैदराबाद का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, एंड दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन इज एशियाज लार्जेस्ट लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन। तो लाइफ साइंस और हेल्थ केयर के लिए सबसे एशिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन है, और इस बार तेलंगाना आंध्र प्रदेश तेलंगाना हैदराबाद में इसको किया गया। ठीक है, नाउ हु इज़ द विनर ऑफ फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड 2023? सो फीफा जो हमारा फुटबॉल का फेडरेशन है इंटरनेशनल, उसके बेस्ट प्लेयर 2023 का अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? एंड दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू लियोनेल मेसी, हु हैज़ बीन द वर्ल्ड कप विनर कैप्टन फ्रॉम अर्जेंटीना, और इस बार उनको फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड उनको दिया गया है। सो यू कैन सी दीज आर द लिस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अवार्ड्स। नाउ World Seagrass Day is observed on 1st March. Which of the following is our functions of seagrass? जो वर्ल्ड सी ग्रास डे है वो हमेशा 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार अगर आप बात करेंगे तो सी ग्रास के क्या क्या फंक्शन है, आखिर क्यों ये सी ग्रास डे मनाया जा रहा है, उसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सी ग्रास, देन इट इज ऑल्सो अ कार्बन सिंक। नाउ कार्बन सिंक इज समथिंग विच एब्जॉर्ब CO2। सो CO2 के एमिशन को, अगर आप CO2 को आप ऑब्जर्व करने वाले जितने भी ऐसे बॉडीज होते हैं, जैसे वेटलैंड हो गया, मैंग्रोव्स हो गए, दीज आर नोन एज कार्बन सिंक। तो सी ग्रास से कार्बन सिंक की तरह काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कंटेमिनेशन इन सी फूड। सी फूड के कंटेमिनेशन को भी रोकने में ये हेल्प करता है। प्लस इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द सी हॉर्सेस। सो द आंसर शैल बी मोर देन वन ऑफ द अबव, बिकॉज दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सी ग्रास। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट विल बी सेटअप इन विच स्टेट? सो नॉर्थ ईस्ट का पहला बायोगैस प्लांट जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को, और वो सेटअप होने जा रहा है असम में, इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट सोनापुर। सो द आंसर विल बी असम, एंड इट इज सेटअप बाय रेडलमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नाउ रिसेंटली द टर्म यूनिवर्स ब्रेकर्स वेयर इन द न्यूज, दे आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में यूनिवर्स ब्रेकर्स न्यूज में थे, और इनका रिलेशन इनमें से किसके साथ है? जायंट एस्ट्रॉइड्स, न्यूली डिस्कवर्ड ब्लैक होल्स, या मैसिव फर्स्ट जनरेशन गैलेक्सी? सो अगर आप बात करेंगे, दीज आर रिलेटेड टू मैसिव फर्स्ट जनरेशन गैलेक्सी, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इनको फाइंड आउट करा है, एंड दे हैव डिस्कवर्ड 6 extraordinarily massive first generation galaxies called universe breaker galaxies, and they were formed roughly around 500 to 700 million years after the Big Bang. Big Bang, that was the explosion which created of the universe, and this particular thing was spotted using the cosmic evolution early 44 release science through the James Webb telescope जो हमारा है उसके थ्रू। Now, exercise Cobra Warrior was be held in which air base of United Kingdom?
अभी हाल ही में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है? सो इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन वेडिंगटन। और आपको बता दें कोबरा वॉरियर जो है वो एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होता है। सो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर वेडिंगटन के एयरफोर्स बेस में इसको कराया गया है यूनाइटेड किंगडम। एंड इसमें और जो पार्टिसिपेंट्स थे इस बार दैट वेयर फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएस एंड सिंगापुर। ठीक है। नाउ in Bihar budget 23-24 which of the following has been allotted the highest amount? बिहार का जो इस बार का बजट पेश किया गया था 20 फरवरी को, उसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन किसको दिया गया है इनमें से? द करेक्ट आंसर इज एजुकेशन। एंड यू कैन सी दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट एजुकेशन हैज़ बीन गिवन 40,450 करोड़ एलोकेशन विच इज़ द हाइएस्ट। ठीक है। नाउ Which vehicle will be used by ISRO to launch Chandrayaan 3? तो चंद्रयान 3 जो प्लान किया जा रहा है उसको लॉन्च करने के लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ करेगा इसरो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ GSLV Mark 3 ये यूज़ किया जाएगा। और इसने अभी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इसरो हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट ऑफ द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो GSLV Mark 3 के थ्रू चंद्रयान 3 को लेकर जाएगा। ठीक है। एंड दिस प्लान हैज़ बिन for June 2023 the launch of Chandrayaan 3. Then in the Great Backyard Bird Count 2023 which Indian state recorded the highest number of species? सबसे ज़्यादा स्पीसीज बर्ड के किस स्टेट में देखा गया है इन द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेस्ट बंगाल। सो आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में 489 स्पीसीज बर्ड्स के देखे गए हैं एंड एट द सेम टाइम उत्तराखंड 426, अरुणाचल 407। ठीक है। नाउ as per recent Supreme Court judgment, which of the following will be a member of high-powered committee to appoint Chief Election Commissioner? So, Supreme Court recently has suggested to establish or form a collegium system just like the Supreme Court's appointment of judges, also in case of the appointment of Chief Election Commissioners and Election Commissioners. And in that collegium, it has recommended 3 members should be there, that is PM, CGI and leader of opposition from Lok Sabha, or if not available, leader of the political party from opposition which is having the largest number. So this collegium system or high powered committee should be recommending the names of the election commissioners. ठीक है। Now for this particular question you have to currently think about what is the actual procedure of appointment of election commission in India currently, who appoints, is there any qualification mentioned in the constitution, is there minimum age? So you have to make all those points with respect to this particular news. Then Battle of Bakhmut is associated with which of the following? Korean, Ukrainian या Bangladesh liberation conflict. So the correct answer is Ukrainian conflict, and this Bakhmut town lies in flaming ruins surrounded by hundreds of lines of defensive, and it is a small mining town in eastern Ukraine. कहाँ पर ये eastern Ukraine में एक small mining town है। और this Bakhmut operations have been led by the Wagner Group, a shadowy private militia financed by Yevgeny Prigozhin, a key Putin ally. तो पुतिन के अलाई जो है उनके द्वारा एक प्राइवेट मिलिशिया है जिसके द्वारा ये ऑपरेशंस किए गए थे, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन न्यूज़ दैट इज़ बाखमुट कॉन्फ्लिक्ट और ऑपरेशंस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ चिप 4 अलायंस? सो चिप 4 अलायंस का इनमें से कौन मेंबर नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया बिकॉज इट इज़ अ अलायंस ऑफ 4 कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, US, साउथ कोरिया एंड ताइवान, एंड दिस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू ensure the speedy and you can say steady supply of semiconductor devices. ठीक है। तो ये चिप 4 अलायंस किसका ग्रुपिंग है? जापान, US, ताइवान एंड साउथ कोरिया। देन who is heading the panel set up by Supreme Court to investigate Adani short selling case? So you have seen recently that Adani shares were going down to a very great level, and because of the reason of the short selling cases, so that has been ordered to be inquired or investigated by a committee led by Abhay Manohar Sapre, who has been an ex-Supreme Court judge. So Justice Abhay Manohar Sapre will be leading this committee. It is a 6-member committee, and the other members are O.P. Bhatt, Justice J.P. Devdar, Nandan Nilekani, K.V. Kamath and Somasekharan. ठीक है। Now next, how many appendices are there in the CITES framework? सो साइट्स इज़ एन इनिशिएटिव जो कि ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, कन्वेंशन है ये जिसको उसको कंट्रोल करता है जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज उनके ट्रेड को। नाउ इन दिस साइट्स देयर आर 3 appendices.
which actually categorizes them in order of their, you can say, conservation status, so that more conservation should be provided with respect to their trade. And if you talk about the appendices, first appendix deals with threatened with extinction, that for example pangolins, gorillas and lions from India. Second appendix, which are not threatened with extinction but trade must be controlled to ensure their survival. They are not threatened with extinction but trade must be regulated, and that includes hippopotamuses. And third appendix releases species that are protected in at least one country which has asked other sides parties for assistance in controlling the trade, example Bengal fox और द गोंडेल जैकान फ्रॉम इंडिया. ठीक है, तो साइट्स में ये 3 अपेंडिक्सेस जो हम लोग है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो अभी ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि 3 मार्च को साइट्स का जो है वो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है, एंड दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड साइट्स विच स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज actually is an international agreement between governments of the country to ensure that international trade in specimens of wild animals and plant does not threaten their survival. तो trade करना है but this it should not be threatening their survival. ठीक है, so now because of 50th anniversary sites become important. Then exercise Shinyu Maitri is a bilateral exercise between India and which country? So it is an exercise between India and Japan. और अगर आप देखेंगे तो शिन्यू मैत्री जो है वो जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ इंडियन एयर फोर्स ने किया ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द इंडो जापान आर्मी एक्सरसाइज नोन एज धर्मा गार्जियन. ठीक है, सो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है धर्मा गार्जियन, एयर फोर्स का जो एक्सरसाइज उसी को बोला गया है शिन्यू मैत्री, इंडिया एंड जापान. Siang Uning festival is celebrated in which northeastern state? So the northeastern states celebrate various festivals, and those festivals become important from our examination point of view. And this festival is celebrated in Arunachal Pradesh, and Sarbanda Sonowal has attended this particular colorful Siang Uning festival in Arunachal. It is an important festival of the Adi community at Boleng, Arunachal. So the community also becomes important. That this community is prominent in which of the following states of northeastern India? So that is Adi community, and Uning is a spring festival marking the beginning of the spring season and new year of Adi community. तो न्यू ईयर का जो आदि कम्युनिटी का न्यू ईयर है वो इस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. Now from this particular news, one homework you can do is that there are various festivals which are celebrated to mark the new year in different parts of the country. तो वो आपको उसका एक लिस्ट बनाना है कि किस एरिया में किस पर्टिकुलर फेस्टिवल से नया साल को मार्क किया जाता है इंडियन कैलेंडर्स के हिसाब से. यू हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर लिस्ट. देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स मिलेट महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार? सो यू हैव ऑलरेडी डेल्ट विथ वन थिंग दैट 2023 इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. तो उसको लेकर इंडिया में जो मिलेट्स महोत्सव बनाया गया है वो इंडिया अभी बिहार में दैट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग श्री पशुपति कुमार पारस, एंड यूएन हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दिस ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. नाउ हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर? सो इस बुक को लॉन्च किया गया है समीर कुमार महासेठ के द्वारा, जो कि बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है. इट हैज़ बीन एडिटेड बाय अभय कुमार, एन इंडियन पोएट एंड डिप्लोमेट, and it was released during Grand Trunk Road Initiative 3.0 held in Patna, Bihar. ठीक है, it is a collection of short stories and poems written over a period of 2600 years. 2600 साल तक के बीच का एक कलेक्शन जो है इसके अंदर कलेक्ट किया गया है. Now, which of the following schemes or initiatives of Bihar government have won or has won the National CBIP Award? And both the scheme, that is Ganga Jal Apurti Yojana and Gayaji Dham, has received this particular award by the Central Board of Irrigation and Power in the category of best implementation of water resources. So now both this scheme becomes important, so you have to make short note on both the schemes along with the third scheme which has been there in option, that is Jal Jeevan Haryali Mission. उसके बारे में आपको समझना है. A new initiative called Begar Free City is being started in which of the following cities? बेगार फ्री सिटी इनमें से किन जगहों पे स्टार्ट किया गया है? एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन नागपुर. सो इन महाराष्ट्र अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगार फ्री हैज़ बीन स्टार्टेड इन नागपुर बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर सिटी. दिस इज द जॉइंट वेंचर ऑफ नागपुर सिटी पुलिस एंड नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट. तो आपको बस ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, दैट विच हैज़ स्टार्टेड द बेगार फ्री सिटी, दैट इज नागपुर.
Now, which of the following organization or organizations has launched a program known as FinEmpower recently? Now, this has been launched by BSE and UN Women. So, अगर आप बात करेंगे तो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और UN Women इंडिया ने इसको लॉन्च किया, इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है FinEmpower. And it is a year-long joint capacity building program between these two organizations to empower women towards financial security, because most of the financial frauds or scams are being targeted towards women, and that too in the age group above 35-30 years, because that has been accepted by those, you can say, scammers, that they are more vulnerable to financial threats. So that is why this particular initiative has been launched, that is FinEmpower, financially empower, and that has been launched by BSE and UN Women for India. Then, who among the following is supposed to attend the 146th Assembly of Inter-Parliamentary Union being held in Manama, Bahrain? Now, this question is definitely important because this is something which is in news, but it also points out to one concept, that Inter-Parliamentary group, you can say Inter-Parliamentary Union, is actually represented in, it is actually a collection of, you can say, the various parliaments of the world, and from Indian side this particular, you can say, grouping is being represented by the Speaker of Lok Sabha. So now the currently the Speaker of Lok Sabha is Om Birla, so he will have attended this particular, you can say, assembly. Now the question is important here because this particular thing is a conceptual question as well. It can be asked who attends the Inter-Parliamentary group and represents India. So it is Speaker of Lok Sabha, and that is why the answer is Om Birla. Then, which of the following countries has demanded security guarantee and help in development of civilian nuclear program from US? So recently Saudi Arabia has demanded security assistance from US in developing their civilian nuclear program, and this particular thing is in order to contain the threat from Iran if there is, because we already know that Iran and Saudi Arabia are two poles in, you can say, the Middle East और द वेस्ट एशिया कंट्रीज़ अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरबिया के रिलेशंस हमेशा से बहुत अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी डिफरेंसेस, एंड दैट इज़ वाई सऊदी अरबिया हैज़ आस्क्ड हेल्प फ्रॉम यूएस कि वो अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्लान जो है वो डेवलप करे, उसमें आप उसकी हेल्प करें, ठीक है, because Riyadh is cautious about striking a deal that is likely to come under fire in the Arab world and aggravate tensions with Iran, and that is why this is something which is going to be in news also, because generally the Arab countries do not engage with US because of their support for Palestinian cause, and the US unconditional support to Israel has always ignited you can say warm relations between US and the Arab countries. But this particular deal, or even we have seen certain Arab countries dealing with Israel also, this definitely changing this shift that they are not going to deal with those countries who are against the Palestinian cause. So now Saudi Arabia has asked for this particular help, and this also becomes important. So from this point you can develop a mains argument or mains dimension that how India is trying to maintain or strike a balance in the Middle East with respect to the Palestinian cause. So आपका यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी एक क्वेश्चन बनता है that how India tries to strike a balance. So listen to the question, how India tries to strike a balance in the Middle East region with respect to the Israel-Palestine conflict. Examine. तो ये पॉइंट आपको, इस क्वेश्चन को आपको कोशिश करना है कंप्लीट करने का, व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. देन Ministry of Defence has signed a contract for procurement of 6 Dornier 228 aircraft for IAF from Hindustan Aeronautics Limited at what cost? तो ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है वो 667 करोड़ के कॉस्ट पे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इसको प्रोक्योर करने का, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, रामचंद्र पोदेल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ही हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. तो ये आपके नेबरिंग कंट्री में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. नाउ विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च 3-week women led स्वच्छता कैंपेन?
So 3-week women-led Swachhta campaign has been recently launched by Ministry of Housing and Urban Affairs, who is currently handled by Hardeep Singh Puri, and he has launched that particular initiative, that is 3-week women-led Swachhta campaign. It aims to recognize and celebrate the transition from women in sanitation to women-led sanitation. So that has been this particular thing. Now, as per a recent study by PhonePe and Boston Consulting Group, what percent of total transactions are digital? So this survey has pointed out that in India, the digital transaction has reached to a level of 40% of the total transaction. So at present, 40% of all transactions in India are digital. That becomes very important. Which song has won the best original song at the 95th Academy Awards, that is Oscars 2023? So now we all know that the song name is Naatu Naatu from RRR movie, but the thing is, this question is not going to be asked because it has been very much in news and it's very simple also. But because of India has won an award this year in Oscars, the Oscars award becomes very important. So you have to prepare the table that which particular movie, which particular director, actor, actress, all those lists you have to make with respect to the Oscar awards. That becomes definitely important. Then, who is the winner of Pritzker Prize 2023? And that is David Chipperfield. So British architect and urban planner Sir David Chipperfield has been given the laureate of the Pritzker Architecture Prize, and his most famous reconstruction, the News Museum Berlin 2009. He has been collaborating with Saurabh Gupta of Noida based architecture studio Arcom on the Mughal Museum, which is now known as Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum in Agra. Now, world's longest railway platform is located at which of the following place? And this longest platform has been inaugurated in Hubballi Dharwad area of Karnataka. So PM Modi has inaugurated world's longest railway platform in Hubballi Dharwad, Karnataka, and the station name is Sri Siddharudha Swamiji Station. And the length of this platform is 1507 meters. Who became the first women loco pilot of Vande Bharat Express? So Vande Bharat Express की पहली women loco pilot जो बनी है वो बनी है सुरेखा यादव, and this lady is significant because she also became the country's first female train driver in 1988, and that is why this particular news is important. This particular lady is also important, and she opened Vande Bharat Express from Solapur to Chhatrapati Shivaji Terminal. Next, which of the following banks of USA collapsed in March 2023? So both Silicon Valley Bank and Signature Bank have collapsed recently, one on 10th March and second on 12th March. This is one of the largest bank failures in US history, one of those. And if you see about some other examples, then these are, you can say, the first is Washington Mutual Settle में, then 2008 में हुआ था Silicon Valley Bank, again in 2023 this has been, and recently Signature Bank in 2023. Okay. So now next question is 34 number, that is, which country acted as broker in Saudi-Iran deal that can potentially lead to the restoration of the diplomatic ties between the two? Now this particular deal has been brokered by, you can say anchored by China, and this might lead to the restoration of the diplomatic ties between Saudi and Iran that has been at halt between the two since a longer period of time. And if we talk about this particular thing, then these talks have been brokered by China in Beijing, and it can act as a peace broker between both the countries, and these countries have severed their ties since 2016. So now the correct answer is China. Next, which South American country opened military service to women for the first time in 25 years? So now Colombia has again reopened the military services for women after 25 years. Now a cohort of 1296 women have been enlisted in Colombia's army in February 2023. Now that becomes important news because it has been done after 25 years. Then Hindu rate of growth was recently seen in news. It is associated with which of the following? Now Hindu rate of growth is related to GDP growth, and it is a term which is used to signify the Indian growth rate before the 1991 reforms, which used to revolve around 4%. And because the recent growth rate has been close to that 4%, that has been in news, which has been known as
which is something which is a matter of concern, and it is said that India is dangerously close to the Hindu rate of growth. Okay. Next. So the next question is, Oscar winning documentary The Elephant Whisperers is based on the elephant Raghu. Raghu resided in which of the following national parks? So out of these options, Mudumalai National Park is the correct answer, and Raghu used to reside in the Mudumalai National Park, which is a part of Nilgiri Biosphere Reserve. Now from this question, two things become important. First is that Mudumalai Tiger Reserve location, and which is part of which Biosphere Reserve, and at the same time the Elephant Whisperers becomes important because it has won Oscar award. So the director, author, actor, actress वो भी आपको list बना लेना पड़ेगा. Now next question is, astronomers have discovered gaseous water around which star? So astronomers have discovered gaseous water around V883 Orions, और ये अगर हम बात करेंगे तो ये एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी डिस्कवर किया इसको अराउंड V83 Orionis. They have used this Atacama large millimeter submillimeter array for this particular discovery. तो आपको बस ये planet का नाम यहाँ पर important हो जाएगा. Next, recently world's first 200 meter long bamboo crash barrier has been installed in which country? Now this particular thing has been installed in India and in Maharashtra where Vani Varoda highway. So the answer is Maharashtra, because कहाँ पर हुआ है ये? वानी वरोड़ा हाईवे महाराष्ट्र में हुआ है. It was tested at National Automotive Test Tracks, Indore, MP. Now, Amit Shah launched Safe City project in March in which city? So, Safe City project has been launched recently in Bengaluru, or in the aim is to equip the police with technology to meet challenges of the future, and it is being implemented on a trial basis in 8 cities. ठीक है. Next, consider the following statements regarding UN High Seas Treaty. So it came into effect on 4th March. Yes, this statement is correct. It is a legally binding treaty. Yes, when the countries are have ratified it, it becomes legally binding. And third, it governs an area beyond 12 nautical miles from country's coast. So this particular statement is not correct because it covers the entire, you can say, exclusive economic zone, that is 200 nautical miles. So this is a UN High Seas Treaty, and talking about the same particular context, this question can also be framed that the draft agreement for the Paris Agreement for the Ocean was finalized in which city? Answer is New York, and this is only the, you can say, Paris Agreement for the Ocean, and this is the UN High Seas Treaty जिसके बारे में हमने अभी बात की थी. ठीक है. So it has been finalized in New York. Now, which organization has released the Women, Business and the Law 2023 report? So this report has been launched by World Bank, and if you talk about the top countries which have scored a perfect 100, it includes 14 countries, Belgium, Canada, Denmark, etc. Since 1970, this average has improved. And if you talk about India's score, it is 74.4 out of 100, and its score is, you can say, higher than the regional average. And in South Asia, the highest score has been secured by Nepal, that is 80.6. And these are the 8 parameters which it considers: mobility, workplace, pay, marriage, parenthood, entrepreneurship, assets and pension. Next, which of the following has launched हर पेमेंट डिजिटल टू इंक्रीज डिजिटल ट्रांजेक्शन? किसने हर पेमेंट डिजिटल को लॉन्च किया अभी क्या करने, इंक्रीज करने के लिए? डिजिटल ट्रांजेक्शन. एंड इट हैज बीन लॉन्च बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड द एम इज टू मेक एवरी पर्सन इन इंडिया अ यूजर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट, the term Fosbury flop is associated with which of the following sports? So Fosbury flop जो है वो high jump से related है, and the reason behind this thing is because that it was a high jumper known as Dick Fosbury who passed away recently at the age of 76, and he developed this particular high jump technique that is known as Fosbury flop. Now next question. So recently methanol powered buses were launched in Bengaluru, and methanol can be produced from which of the following sources? So highest coal, yes, it can be formed. Agricultural residue, yes, it can be formed. Natural gas, yes, definitely methane is something which you can say methanol can be formed from natural gas, but nitrous oxide is not the correct answer. So the correct answer is 1, 2 and 3. तो मिथेनॉल के लिए कंपोनेंट जो है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट हो गया. इसके यूजेस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर में, रिटेल कुकिंग में है. देन recently Denmark became the first nation to bury carbon dioxide imported from abroad. It was done under which project? So the correct answer is it has been done under the project that is known as Green Sand project.
तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। क्या आंसर है? ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। और इसने कार्बन डाइऑक्साइड को 1800 मीटर्स बीनीथ नॉर्थ सी के क्या किया है? स्टोर किया है। ठीक है। नेक्स्ट, 5th आसियान इंडिया बिजनेस समिट 2023 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये अभी हाल ही में कुआलालंपुर में 5th एशियन इंडिया बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार का थीम था स्ट्रेंथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर द स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। Now, moving on to the next question, Kessler syndrome is associated with which of the following? Now, this syndrome is in news most of the time because of space debris. स्पेस डेब्रिस को लेकर ये न्यूज़ में रहता है। और अगर आप बात करें अभी, तो इसरो ब्रॉट डाउन द मेगा ट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट इन अ कंट्रोल्ड मैनर आफ्टर इट्स एंड ऑफ लाइफ, ताकि स्पेस डेब्रिस ज़्यादा क्रिएट ना हो सके। नाउ, as per newly launched state sports awards and honors scheme by Bihar government, an Olympic gold medalist will get how much rupee? So now an Olympic gold medalist will receive 2 crores। ये टेबल आप यहाँ देख सकते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़, 1.5 करोड़ सिल्वर, ब्रॉन्ज 1 करोड़। एशियन गेम्स के भी अलग अलग टेबल्स आपके सामने रखे गए हैं। So now this was the particular segment from this particular week's you can say compilation, और मार्च का फर्स्ट हाफ का करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर देखा। So next series we will come with यू कैन से February सेकेंड हाफ क्वेश्चंस MCQs। आज जो हमने मेंस का एक डायमेंशन बताया, आप उस पर तैयार करें क्वेश्चन है कि इंडिया का मिडिल ईस्ट के अंदर कैसे इंडिया की स्ट्रैटेजी हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू यू कैन से इजराइल एंड पैलेस्टीनियन इशू। सो वी विल सी एंड वी विल मीट विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच।